Mama, what are you doing right now? Okay, you're having mangoes. It's okay. But while eating mangoes, you can always watch midday.com. There is a lot of spice in that. All right. And I'm also there. Whoopee. So I'll just introduce you. I'm sure you don't need any introduction, but hello everyone and welcome to midday.com. Today I'm in conversation with Rosesh. I'm sorry, Rajesh Kumar. So Rajesh, I'm sure even today when you step out, people call you as Rosesh. Correct me. जी जी So आपको कैसा लगता है? Do you feel like now it's enough? Don't call me Rosesh anymore. Are you happy with all the adulation and the fan following that you get? No, but there is nothing to be enough. I mean, for an actor, any kind of appreciation is never enough. And that also after 16 years, if you are remembered for something which you have done, आपको लगता है कि यार मतलब एक एक्टर के लाइफ में इससे बड़ा कोई ये मेरी जिंदगी का शोले है which will be passed on from generation to generation. So some work will always remember not only during life but post life also. At least कुछ अच्छा काम ऐसा है कि जो आने वाले कम से कम 2-3 पीढ़ियां तो देख ही सकती हैं. Do you ever feel like the audience should look at you beyond your character also to accept all the other roles that you played? No, I mean they did the best part about the kind of roles I have done. जब किया है उस समय तो लोगों ने एक्सेप्ट किया ही है. Right. बट एक है जो जिसका इंस्टेंट रिकॉल वैल्यू है वो है रोसेश का. सो वो हमेशा ही रहेगा. आप मतलब देयर इज नथिंग टू फील बैड अबाउट इट. हाँ, ये हो जाता है कि एक इशू हो जाता है कि कई बार आप वो ओवर शैडो जरूर कर जाता है बाकी कैरेक्टर्स को. बट दैट्स फाइन. आई मीन दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी. Like अभी Bhalla calling Bhalla का interview है, but we are talking about Rosesh. So this is how it overshadows. Right. Whose idea was Bhalla versus Bhalla, and what drew you to the character? There is a full creative team which is involved. So there were 3-4 of them. They approached me to play this, and during this challenging time, playing shooting is the biggest challenge right now. Right. So this concept, once it was discussed, पहले मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे करेंगे. मुझे लगा कि अच्छा सामने लैपटॉप रखेंगे और हम लोग Zoom पे कर लेंगे. But never knew that this concept will involve the whole family, where you ask your kids to do the setting and ask your wife to do the camera, and then you are acting, then you are also seeing the lighting yourself, you are seeing the setting yourself. तो थोड़ा सा वो एक हिच था कि पता नहीं will it happen or it won't happen. But thankfully with all the way the script was written and the way it was directed, it became so easy end of the day कि ऐसा लगा ही नहीं कि अभी मतलब आप ऐसा कोई सीरीज शूट कर रहे हैं. एंड व्हेन यू वॉच इट आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एंड्रॉयड या आईफोन या इस तरह के फोन से आपको मतलब हम लोगों ने शूट किया हुआ है. ना आपको लाइट की प्रॉब्लम उसमें नजर आएगी, ना साउंड का प्रॉब्लम समझ में आएगा. So this whole going with the age and with the technology, I think the concept once it was pitched, and these people when they decided to pitch to us, half of the battle was won. To think like that became is very we need to appreciate that. And plus second सबसे बड़ा फायदा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस तरह के concepts अगर अभी शुरू होना तो many people who are unemployed and sitting at home, all the actors, everyone can get work. If you just find one good concept, you can always come up with these kind of brilliant ideas. So again, the show is a comedy. Like, do you think you're drawn towards these comedy roles, or are people always looking at you as one of those actors who can really pull off a comic role easily? I think that is one of the reasons. Secondly, कॉमेडी का मुझे ये फील होता है कि जैसे बाथरूम में हर कोई गाना गा लेता है, लेकिन क्लासिकल सिंगिंग जो है बहुत कम लोग गा पाते हैं. कॉमेडी इज मोर लाइक क्लासिकल. तो अगर कुछ क्लासिक करना होगा तो आपको थोड़ा सा ट्रेन्ड एक्टर थोड़ा प्रूव करना पड़ता है कॉमेडी में. सो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रूव किया है कि कर सकता हूँ कॉमेडी.
So I think that is why people give me so much of opportunity and all, and they think that I can pull it off, obviously. And but अभी तक बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है कि अरे यार इसको बेकार रोल दे दिया, ये तो इसके बस का ही नहीं था. Was not. I'm sure nobody's going to say that or things like that. And what did you enjoy most shooting at home? Those scenes where I get drunk and all, and there was this very thin line because drunk scene to perform, it's very difficult because हमारे जहन में ना दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के शराबी के सीन्स इतने बैठे हुए हैं ना कि आपको नया कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, you know. So that was the challenge. I took literally good 2 days before I said okay, now I'm ready to shoot. क्योंकि मैं इतना नर्वस हो गया था. It was a full 2 minute का मोनोलॉग था where I'm talking to myself in the sense कि सेल्फी जैसे अभी कर रहा हूँ ना मैं, इसी तरह सेल्फी लगा करके, and then I'm supposed to talk to my wife where I'm accusing her that 25 साल हो गए शादी को और तूने परेशान कर दिया मुझे, ये वो. But I was not supposed to sound like a drunk. I was and yet I was out. So basically sometimes when you speak ड्रंक वाले स्टेट में कई बार लोगों को याद नहीं रहता कि नेक्स्ट डे क्या हुआ है. बहुत सारे ऐसे लोग पी पा करके आउट हो जाते हैं कि उनसे पूछो तो बोले यार उस समय तक का तो मुझे याद है लेकिन उसके आगे का याद नहीं है. तो उस स्टेज पे परफॉर्म करना ना, when you know that you are understanding everything but you don't know what you're talking, so that was the challenging. Did you actually have to drink? No, I don't know. I shot that at 10:30, 11 in the morning, in fact, with the kids and all around. Okay. So, but luckily क्या हुआ कि it just fell in place and I only gave one shot. मतलब मैंने रीटेक भी नहीं किए उसके. तो थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि अरे अच्छा काम किया है आपने, लॉकडाउन में भी अच्छा काम कर गए. Right. तो वो एक है. दूसरा और तो चैलेंजेस, मतलब अभी तो शूट करना बाकी है, अभी तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ बिकॉज अभी 11th एंड मतलब वो सब एपिसोड्स आए हैं तो थोड़े से ट्रिकी हैं, शूटिंग वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी. और चक्कर क्या होता है कि इस समय कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है ना, तो सारा जजमेंट आपको खुद ही लेना पड़ता है कि am I doing it right, because there is no one who's correcting you, there was no one who is saying that you are going wrong. So did it ever happen that you shot an entire sequence and later the director was like कि नहीं ये नहीं ठीक है, वापस करना पड़ेगा आपको? अभी तक तो नहीं हुआ है डिजास्टर ऐसा किया है लेकिन हाँ कुछ शॉट्स मिस हो जाते हैं तो फिर आपको बताया 1-2 दिन बाद पता चलता है अरे यार वो शॉट नहीं किया तुमने. उस समय ये क्या कपड़े पहने हुए थे वो ढूंढो, अच्छा गलती से वो कपड़े धुलने चले गए तो वो दिन गया. छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अब समझ में आता है कि शूटिंग वाले आपकी चीजों को इतना आसान बना देते हैं ना सेट पे कि आपको सोचना ही नहीं, आप कपड़े उतार के फेंक दिए, नेक्स्ट डे आपको पता है मेरा काम नहीं है, असिस्टेंट बताएगा कौन सा कपड़ा था. यहाँ तो हर दिन आपको ध्यान रखना रहता है कि यार इस सीन में कौन सा पहना था, ये एपिसोड में कौन से कपड़े चल रहे हैं. So those are over alertness वाला टाइम हो गया है. Right. So talking about the challenges, which was apart from Bhalla calling Bhalla, what were the other challenging roles that you did, like the most challenging one according to you? Mr. Sharma was challenging. Mr. Sharma इलाहाबाद वाले Mr. Sharma का. Right. नीली छतरी वाले में भगवान दास का एक किरदार था which where I had replaced यशपाल शर्मा. तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग बन गया था बिकॉज 52 एपिसोड्स में एक भगवान दास कोई और था और सडनली यू आर रिप्लेसिंग समवन. दैट बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज. मिमिक्री वगैरह जो हम लोग कभी कभी करते हैं छोटे छोटे अपना न्यूज आएगा या इस तरह का, वहां पे जो तुरंत कैरेक्टर बदलने पड़ते हैं, दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. डू यू मिमिक पीपल ऑफन? No, I don't. I'm very bad at mimicry. Very bad. I try to make that character my own. जैसे अब अकबर बीरबल में अकबर का किरदार ऐसा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. आवाज पृथ्वीराज कपूर की ही थी लेकिन उस कैरेक्टर को अपना बनाया था मैंने.
Okay. अदरवाइज मुझसे अगर कोई ऐसे खड़े खड़े बोल दे कि मिमिक्री कर लो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. And apart from shooting for Bhalla Calling Bhalla, what else have you been doing during the lockdown? So much of cooking. Really? Wow. या मतलब last 60 days रोटी चावल के अलावा कोई भी चीज हमारे घर में रिपीट नहीं हुई है. मतलब सब्जी सेम है, बट परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, style of making, and rajma to chole to pasta to pizza to burger to kebab, made everything. That's amazing though. Like you're doing so much more. See, एक तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम लोग गधे होते ना तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही काम होता कि हमें वो बस सामान उठाना है. Being a human, you have to multitask. ना सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मेड्स के लिए, बल्कि जो हाउसवाइफ्स हैं, यू नो, हमारे हिंदू कल्चर में चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो काली हो, किसी को भी ना, मतलब वो हमेशा देखा होगा आपने कि मूर्तियों पे 10 हाथ होते हैं. यू नो, that's the way our housewives are. I mean, they all are Durga, they all are Kali, because they can multitask. But इस लॉकडाउन ने ये सिखा दिया है कि male also can multitask. They should multitask. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और दायित्व खत्म हो गया. So do your children also watch your serials, and have they watched some of the older serials that you worked in? The elder one finished all the 70 episodes of Sarabhai in this lockdown. The younger one has just finished Maharaj Ki Jai Ho, which just came on Star Plus. Okay. During lockdown it went. जो छोटा वाला है और बड़े वाले भल्ला कॉलिंग भल्ला है. मतलब पापा है भी और कभी कभी लगता है नहीं भी है. जो इस कंफ्यूज ये थॉट कि बहुत रियल स्पेस में पापा कर रहे हैं. ये ऐसे ही है पापा भी मेरे. Do they ever criticize your roles, or do they have any things to say about how you perform or what you do? No, they like it. In fact, the younger one is very pissed कि अगर मेरे scenes नहीं है तो he just moves away. फिर वो मेरे scene के time पे ही आता है. And the older one watched Sarabhai. Did he have any specific comments or anything to say about it? Apart from me, he loved everyone. Surprising to hear, because if anyone you ask Sarabhai versus Sarabhai, of course all the characters are amazing, but your mama has like become synonymous with the industry. While traveling and all, they know that okay, Papa is known for a character called Rose. The elder one has reached that space, so he saw it and he loved it. He was binge watching it every time. I only hear my title song Sarabhai. The younger one is still evolving. I mean, he's only 8, so it's too early for him to understand Sarabhai. But he loves Rose. He himself mimics, so it's okay. I'm proud of them. Sweet. That's lovely. Okay. So often I'm going to ask you, so when TV serials or films don't work out or not really acclaimed by the audience, it's not a very good feeling, but how do you take praise or criticism? See, if someone tells me that good work, good job, I feel very embarrassed. I don't know what to react. In fact, our producer Nitin was telling me, "Sir, आप तो compliment ले नहीं रहे राजेश तुम यार, सीधा सटाक no बोल देते हो." मैंने कहा I feel very, I get this palpitation. I feel very uncomfortable if someone is praising. Because okay, अच्छा है, ठीक है, मतलब they loved it. But the moment anyone says that you were not so good, उतना मजा नहीं आया, then I'm all ears. अब बता कैसे, then I want to know. But you're more of somebody who works with criticism to take it like as a stepping stone to do better? For me, it's like now it doesn't affect. I mean, 21 years of being in industry, so many good roles, bad roles, good serials, bad serials. Abhi jaise Maharaj Ki Jai Ho, 1 year we shot 50 episodes and it was mythological comedy, so much taam jham and everything. But it just came and went and no one noticed it also. Maharaj nahi chala to Bhalla chal gaya. Right. That's why a lot of films these days and TV serials mostly, like they are coming directly on OTT platforms. So do you see it as a pro or a con for the industry? See, if they are fetching money, at least break even से थोड़ा सा profit होता है, तो सब लोगों के पैसे secure हो जाते हैं.
मेरा यह है कि OTT प्लेटफॉर्म आज के दौर के हिसाब से कोविड-19 के परिवेश में अगर देखें उसको, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, बिकॉज आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट वालों के लिए अभी नया शूट कर पाना बहुत मुश्किल है, पुराना जो शूट किया है उसको रिलीज होना बहुत मुश्किल है। तो OTT के ऑप्शन के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी, प्रोड्यूसर पैसा रिकवर कर जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के पैसे अटके हुए हैं, वो पैसे निकल सकते हैं, you know, so there are lot of pros than cons to it. कॉन्स ये है कि ठीक है, वो फिल्म को जो एक ग्रैंडोर मिलता है 75 mm का, वो कहीं ना कहीं आपके 32 इंच 36 इंच 40 इंच टेलीविजन पे रह जाता है, तो शायद उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाता है जितना वो उसका हॉल में होता है या पिक्चर। तो दोनों है, पहलू हैं इसके, लेकिन अभी के परिवेश में, अभी के स्थिति में मेरे हिसाब से दिस इज द advisory thing, and this is a very best thing to do right now. And considering this lockdown might end in the next few days, would you feel confident enough to go out and shoot, or go on to? No, not at all. I don't think for another month or two I'll be confident enough, because how come a channel person or a producer or creative people can decide how good or bad my immunity is, so if I get affected, there are so many people who will get affected. It's like कि ठीक है, मतलब entertainment के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन हाँ, मतलब COVID-19 के मुंह में जाकर के बाहर आने का कोई मतलब नहीं है। Rajesh, finally, I know it'll be, I'm sorry if I'm overshadowing you with Balla Calling Balla, but how would Rosesh ask people to watch Balla Calling Balla? Oh, बाप रे बाप, okay. So इस कोरोना के टाइम पे कुछ हो ना हो, कुछ करो ना करो, प्लीज ZEE5 पे भल्ला कॉलिंग भल्ला जरूर देखो, because I am calling, you have to listen to me, okay? Listening to you saying this is like another thing altogether. Okay. मतलब वो ऐसे मुंह में अचानक रोसेश बोलना is very doesn't go with the look also. Right. And finally, one last one. How would he tell his mama to watch midday.com? Mama, what are you doing right now? Okay, you're having mangoes. It's okay. But while eating mangoes, you can always watch midday.com. There is a lot of spice in that. All right. And I'm also there. Whoopee. Thank you, Rajesh, for being such an amazing sport, being so sweet about it. Lovely to meet you, and hopefully we will meet soon once the lockdown ends. And looking forward to seeing Balla Calling Balla. Thank you. Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.